बैठा हुआ भीख मांग रहा था और अपनी उनके हवाले से वो नॉर्मल है उनके लिए, वो एक अपनी बियर एंजॉय कर रहा था। तो एक जर्नलिस्ट उसके पास से गुजरा, तो उस जर्नलिस्ट से उससे पूछा कि भाई आप यहाँ रहते हो, आपसे 100 गज पीछे बादशाह का महल है और उसमें वो बादशाह रहता है किंग कार्ल गुस्ताव, और तुम्हें उसमें क्या फर्क है? जर्नलिस्ट भी क्रेजी होते हैं वहाँ के। तो उस भीख मांगने वाले ने कहा अच्छा भीख मांगने की इजाजत नहीं है सुनो, तो वहाँ वो भाग मांगने की जरूरत भी नहीं है, तो जो बैठ जाता है उसको लोग बैठ देते। तो जैसे नूरिया ने कहा ना, फूल इनटू गिविंग। सो वो उससे पूछा हमारा जर्नलिस्ट ने कि बताओ यार कोई तो फर्क होगा। उसने कहा मेरे नजर में तो कोई फर्क नहीं है, वो भी इंसान है मैं भी इंसान हूँ, उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है तो इतना होता है, उसका कम ही नॉर्मल होता है, मेरा नॉर्मल रहता है अक्सर, तो टेम्परेचर बॉडी का भी वही होता है, तो फर्क नहीं है। कहने लगा कोई तो फर्क बताओ। कहने लगा यार तो बाकी मुझसे मिल ली हो ना, मैं आज़ाद आदमी हूँ, जाते हो बादशाह से मिल के कोशिश करो मिलने की। वो तो गिरफ्तार है इस महल में, 4-5 सफाई उसके पास होते हैं, आगे पीछे फौज होती है जो बाहर निकलता है, ना किसी को मिल सकता है, ना किसी को देख सकता है, ना किसी से गुफ्तगू कर सकता है। उसकी लाइफ सारी की सारी जो है ना वो फंसी हुई। उसने कहा लेकिन फिर भी कोई ना कोई फर्क होगा। उसने कहा यार फर्क मेरा ख्याल है तुम इतना मजबूर मुझे कर रहे हो तो ये कि मैं तो आम आदमी हूँ, वो भी आम आदमी है, लेकिन हो सकता है उसको पता ना हो कि वो आम आदमी है। तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम आम आदमी हैं, and then we get into serious trouble. So people ask me, what is success, Max? I want to be successful. What is success? And of course there are lots of expression to success, but I sometimes think success is that people who are important for me, my family, my loved ones, what kind of a relationship I have with them. If they respect me and love me, then I'm successful. But if they are fearful of me and are afraid of me, I'm not successful at all. So what do we need to earn really? We can earn a lot of money, we can earn best houses, but what we really should be looking at earning is respect, especially from our loved ones. So that's one. And then people ask me, what is happiness? And that's complicated, because I think happiness for let's give an analogy for the finest car that has been created, and many of you have been exposed to the finest cars that have been created. So the creator of the finest car, the manufacturer of the finest car, if that manufacturer gets to know how wonderful this car is performing on the roads in Pakistan, how much comfort that it is giving to the passengers that it carries, how much great road grip it has, aerodynamics, fuel economy, comfort, speed. So if this car is able to give something, all these things to the user, the creator of this car would feel very happy. So happiness for me is to be able to do what we have been designed to do as human beings. And in my opinion, actual design is that we give happiness to each other. That's all we can give. We get crazy, really crazy, not this crazy, the kind of crazy that people come to me to consult. We get real crazy when we start thinking in everything, what is in this for me? Why should I do this? मुझे क्या फायदा होगा? और नईम भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि लोग पहले पूछते हैं कि काम क्यों करेंगे, मिलेगा क्या? वो ये नहीं सोचते कि काम इसलिए करेंगे मेरा आज ये है, that this is what I'm destined to do. So somebody said कि यार थोड़ा सा ह्यूमर भी डाल देना, तो मैंने पिछली क्रेजी में बताया था कि I've been married for 40 years to a Swedish woman,
She is a very good woman. She lived 40 years here with me in Pakistan. मेके भी चली जाती हैं कभी-कभी मेरे साथ भी और मेरे बगैर भी. वो यहाँ नहीं है तो आप सच बोल सकते हैं. जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी रिमार्केबल woman है क्योंकि वो उनसे पूछते हैं लोग स्वीडन में कि आप मकबूल बाबरी को मैक्स को साथ लेके नहीं आई, तो कह देती हैं उनको कि उसको भी छुट्टी की जरूरत है. She's a good woman. तो एक छोटी सी बच्ची जो थी, छोटी सी बच्ची बेड के ऊपर खड़ी थी, अम्मा को गुस्सा चढ़ा हुआ था तो अम्मा उसको बहुत डांट रही थी. तो वो जब खामोश हुई अम्मा तो उस बच्ची ने अम्मा की तरफ देख के कहा, मामा, why are you mad at me? I'm not your husband. Anyway, we have a remarkable person who will come and talk to us. Really crazy. And in a way, I had also the opportunity of being in the same classroom as him at some stage, but I have not influenced his craziness the way crazy he becomes. I don't want to own that part of his craziness. A biker, a free soul, free spirit. I don't know how corporate sector kind of tolerates him. And he's a guitarist, a musician, interested in technology, studies mathematics, become a doctor at a medical school, and then goes on to Lumps to do MBA, and then fortunate person again, because he, instead of working all the time, he is going around the world studying and educating himself. Remarkable human being. I don't want to talk too much about him. This is Dr. Usman Bhatty. Please put your hands together for Dr. Usman Bhatty. आवाज आ रही है सबको? I'm very loud, so usually I don't need a microphone. और आपने इतनी ऐसी बातें की कि वो बत्ती चली गई, उन्होंने कहा ये ठीक ही नहीं. So I have no clue why I'm here, especially when I look at the company that I'm in and with reference to the audience. Then, especially with reference to the speakers that I stand together with. तो पहले it would not be wrong if I say कितने मैं रही थे कितने तेरी सुना. और उन्होंने इंट्रोडक्शन शायद मुझे देख के कराया था कि जी आम आदमी, तो I am absolutely 100% sure that I am a very आम आदमी. I have a journey that I would like to share with you. I am crazy, yes, by the convention of how things are done. I've done things which to normal people look like absolutely crazy. I'll take you through a few photographs. ये तस्वीरें बिल्कुल उस तरह की हैं जिस तरह की अगर आप भी अपनी कभी एल्बम बनाए तो वो बिल्कुल ऐसी लगेगी. मैंने बहुत सारे लोगों की एल्बम ट्राई की हैं और I have not been able to so far see the albums जो कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क लगते हैं. पहली तस्वीर मेरी थी, मेरा नाम मेरे सर पे और बैक पे दोनों जगह लिखा हुआ है. This is 7 people. मेरे दादा के 7 भाई और 7 बहनें थी. That's my dad, and he was a veterinary doctor. That's my mom. लेफ्ट वाली तस्वीर में ऊपर वो बंदूक चलाते हुए दिखाई गई है. She's somebody who probably would have done it only once in her life. She was a professor. She retired from a college here. She was a master's in education and philosophy, and she was retired as vice principal at Lady Enlightening Training College. She has had a huge influence on my life. Please excuse me, मैं उर्दू, अंग्रेजी और कुछ पंजाबी में भी जा सकता हूँ. That's my mom and dad together. That's my family. We are 3 brothers. हम सारे कन्वेंशनल तरीके से पाले गए. सबको शुरू से ही बचपन से बताया गया था कि या तुमने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कुछ भी नहीं बनना. और हम फर्मा बलार थे तो हम तीनों जो है वो इनमें से एक बन गए. तो बस डॉक्टर थर्ड वन उसने कहा कि डॉक्टरी बहुत हो गई, मैं तो नहीं जाना, और he became an engineer. The one
picture that I have right up there is उनमें से एक डॉक्टर था जो कि जब पहली क्लास का इम्तिहान हुआ तो वो सारे सब्जेक्ट्स में फेल था और आर्ट में उसके 100 में से 100 थे। वो जब वो डॉक्टर बन गया तो उसको ख्याल आया कि यार मैं की और मैं कुछ ऐसा काम भी करना जो मैं करना चाहता था। तो ही स्टार्टेड पेंटिंग, ही डज अ लॉट ऑफ वाटर कलर, ही इज अ मेंबर ऑफ द आयरिश वाटर कलर सोसाइटी यार। और बड़ी देर से जो है वो मेरे इस तरह के दोस्तों को ढूंढ रहा है कि अच्छा यार मैं 4 तस्वीरें पाकिस्तान में कब दिखा सकता हूँ। That's me. I look like every other child in the world. और जैसे कि चर्चिल ने एक ज़माने में कहा था कि जब वो बहुत छोटे होते हैं और बड़े आदमी ने कहा था कि they all look like Winston Churchill. तो इससे छोटी तस्वीर जो है वो मैंने लगाई। That's my school. I went to St. Anthony's High School. मेरी माँ ने काम करना इसलिए शुरू किया था कि क्योंकि उनका जो ससुराल है वो कहता था कि आपको काम करने की ज़रूरत है, यार तो कोई भी काम नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने बच्चे चंगे स्कूल इस पढ़ाऊंगी। तो उनकी सारी तनख्वाह जो है वो हमारे स्कूल की फीस और इस ब्लेजर और इस टाई के खरीदने में और फीस देने में खर्च होती थी। Then I went to गवर्नमेंट कॉलेज और वहाँ मैंने बंदूक भी चलाई क्योंकि मेरी माँ ने बंदूक चलाई। उसके बाद मैंने कभी बंदूक नहीं चलाई। Then I went to King Edward मेडिकल कॉलेज और मुझे अपने जैसे 4-5 क्रेजी और बल्कि ज़्यादा क्रेजी मिल गए। हमें मेडिकल कॉलेज में घेर के नाम से बुलाया जाता था क्योंकि वो उसकी रीज़न ये थी कि वो कहते थे जितने पाए जाते हैं इकट्ठे पाए जाते हैं तो लेटे हुए हैं पार्ट और पढ़ते भी थे। ऑल ऑफ देम आर मोस्ट ऑफ देम आर इन द US and they're all well established doctors working at various places. One of them is an oncologist at Harvard. तो उनके लिहाज से उनका ख्याल है मेरा दिमाग खराब है अभी तक। And this is us a few years ago. अब वो सवाई मेरे बाकी सब बूढ़े हो चुके हैं। मैं ना सिर्फ बूढ़ा हुआ हूँ बल्कि गोरा भी हो गया हूँ। Because if you look through those photographs, my original color was not darker. I was brown when I was born. I was brown to the age of 25. But then I started changing colors. मेरी बेगम जिस दिन एक दिन मेरे साथ लड़ी थी तो वो बड़े गुस्से में उसने आगे कहा कि अब आप बाल बदल रहे हैं। मैंने कहा मैं इतने साल में रंग बदल चुका हूँ तो बाल बदलना तो नहीं कर रहा। Then I went to Lams. Medical school के बाद Lams जाना was in those days considered to be कि इसका वाकई दिमाग खराब है और ये पता नहीं क्या करना चाह रहा है। But I saw Babari Saab's interview on TV and he was speaking to Naeem Bukhari and that talk somehow changed my mind. It inspired me. I was struggling with the idea of कि मुझे अब ज़िंदगी में क्या करना है। मैं डॉक्टर तो बन गया हूँ और बहुत सारे लोग उसको जो है मुझसे बाहर जा रहे हैं। I didn't want to go abroad. I didn't want to leave my mom alone. My father passed away when I was 15. हमारे मैट्रिक एग्जाम हो रहे थे और मेरा अगले दिन फिजिक्स का बच्चा था and he passed away. तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तुमने अगले दिन इम्तिहान देना है। मैंने कहा जी बिल्कुल देना है because I don't know उसको भी पता ना होता है किस स्टेट से गुजरा होता है। I have no clue how and why I did that, but that's what I did. So later on I decided कि मुझे यहाँ से नहीं जाना, बाकी सब जो है वो जा रहे हैं। तो Lams looked like a great place. उसको जो मुझे समझ आई मैंने कहा कि यार यहाँ चलते हैं और मैंने सुना है कि बड़ी अच्छी जगह है और यहाँ से लोग जो है ना काम करके they do well. And I have made lifelong friends. मैंने अमेरिका आज से 3 साल पहले जाने से पहले अपनी क्लास के 42 लोगों में से 41 लोगों को मैसेज भेजा कि मैं वापस जा रहा हूँ and we're still together. So I'm in touch with almost all of them. सवाए उसके जो कि बिल्कुल ही कहीं गायब है और Facebook पे नहीं है। Those were the only people that I could send my message to. So I have lifelong friends. Then I joined Nestle and Nestle has been a very large part of my life. That I call it home because it's a great place. I go there every day, not to work, but to meet people, to interact with people, to have fun with people. काम भी साथ में चलता रहता है और मेरा ख्याल है कि चल ही रहा है इसलिए उन्होंने अभी तक मुझे वहाँ से निकाला नहीं है। I got married, trust me. That was the same year that I joined Nestle many years ago. I was still brown. And I have 2 sons. They're not as small as they look here anymore.
They're 17 and 15. The other one is an inch taller than I am, and I have to tell him not to sit on me because he's big and can lift me up very easily. The smaller one is another story. That's my family. That's me in the background. I've had a very forest gump life. I've met the lady up close and personal. Our camera failed that day. This is the only photograph that my nanny found in the newspaper the next morning when this happened. I have no other proof that I met her. And I had a couple of other instances where similar things have happened. I have sung with the only living member of R.M on stage in Hindu Gymkhana, Karachi many years ago. I've bumped into people on street that you do not expect. I'm absolutely sure that there is something crazy going on around me. I have a few friends. Two of them are sitting right here that I met a few years ago, and we decided to scale the roads. और हमारा जो है वो काम सिर्फ ये था कि हम सुबह संडे वाले दिन 6:30 बजे जब बेगम ना उठी हो और बाकी सारे लोग अपने अपने आराम से सो रहे हो, हम उसमें फिर बाइक लेके निकलते थे, शहर तक चक्कर लगाते थे और फिर कहीं बैठ के नाश्ता करते थे. That's my other existence. I like to play music. और काफ़ी देर से मैं इधर उधर मुख्तलिफ ज़िंदगी के मौक़ों के ऊपर पंगे कर रहा हूँ. That's the transition that I'm talking about. I should have put it the other way around because I'm much better now. So it's not in the descending or the ascending order, but that's how I have transformed. This is my year at MIT. That's my inspiration, that's my mom, and the little child that you see down there is a story that has had a huge impact on my life. We went through an adoption process. We adopted a baby girl for my brother, and that has had quite a life-changing impact on how I look at things, and उसमें love की और एक बहुत बड़ी inspirational story है उसके पीछे. And I firmly believe that I have received much more than I have asked for, and definitely much more than I deserve. Okay, I'll try and capture it 2 minutes. I think हमने अपना bar for inspiration जो है ना वो बहुत बड़ा कर लिया. दुनिया में बच्चे ऐसी चीज़ होते हैं जो कि जिनको आप इंस्पायर आराम से कर सकते हैं, and who can think beyond. I think we should all lower down our expectation of being inspired. हमें बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए आप to be inspired. हमें बहुत बड़े लोगों के बोल, बहुत बड़ी स्टोरियाँ, बहुत बड़ी claim, बहुत बड़े एक्शन और सब चीज़ हमारे नाम बहुत बड़ी चाहिए to be inspired. I think we should all lower down our expectations, our benchmarks for being inspired. We should tone it down a little bit. We can be inspired, and inspiration to me is the biggest thing that we need today. हमें छोटी चीज़ों से inspire होना शुरू होना है, and this session in itself is all about inspiration. We've all gathered here to listen to a few people who we call crazy but have done things जो कि उनसे कोई नहीं कर रहा था, उनसे कोई expect नहीं करता था. अगर वो ना भी करते तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता. कोई और somebody who works for you, a smile can be significant enough. ₹1 किसी के लिए significance वो create कर सकता है जो किसी और के लिए ना करे. कोई रहमदिली, कोई छोटा सा favorable act, किसी की बात सुन लेना, that's significance. And I think we should all strive for significance because it doesn't require anything. You can be significant and substantial. You can do a lot of great things, and that is great. Keep doing that. That's being significant in that way. But don't leave the small, significant things. They are significant enough to be substantial.
And that's my message. It may sound crazily simple, but to me, that is what it is. Last thing that I would say, one thing that really inspired me was, and made me think a lot, or मेरे behavior को जिसने बहुत profoundly, I was reading somewhere and मेरा ब्राज़ील में एक पीर है जिसका नाम है पाउलो कोएलो. मैं उनको पीर साहब बोलता हूँ. I was reading through one of his books and बड़ी छोटी सी स्टोरी थी कि एक कोई मंजूर सा आदमी था, वो गली में से कहीं से गुजरता था और हम जैसे फनकार लोग जो है वो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके हुलिये का, उसके गुजरने का, और वो रोज़ गुजर जाता था वहाँ से. एक दिन वो इसी तरह से उसका मजाक उड़ाया गया, वो रुका एंड ही ब्लेस्ड देम. वो एक बीच में से जो बंदा था उसने कहा यार आज तक कमाल ही हो गई. वो गया, उसने रोक लिया उसको. उसने कहा कि ठहरो थे, आप रोज यहाँ से गुजरते हैं, हम रोज आपका मजाक उड़ाते हैं, आप रोज यहाँ से गुजर जाते थे, आज तो आपने आदि कर दी. उसने कहा यार ऐसी क्या बात है नहीं, आज आप ना सिर्फ गुजर गए, आप रुके और आपने हमें दुआ दे दी. तो ये क्या चक्कर है, ये बिल्कुल समझ नहीं है. उसने कहा यार ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, वन कैन ओनली गिव व्हाट वन हैज.